Good morning, Amol. How are you? Hi guys, good morning. How are you? We'll just wait for everyone to join in so that we can start together. Hi Abhishek. Good morning, Sahil. Good morning, Sachin sir. Good morning. How are you? Good, good. How are you, sir? Absolutely fine. I hope your that technical problem Yeah, has yeah. been resolved. Yesterday night I've already got another writing part, so I hope this works fine. Wonderful, wonderful. I think students will join in another 5 minutes. Yeah. So That's the reason I'm waiting for. yeah, wonderful, wonderful. Good morning, everyone. I hope all of you are into wonderful morning mood, and let's make most of it. And no, sir will start in 5 minutes. So enjoy your class. Have a lovely Sunday. And do remember to join in again if for GRE class, which is there in the evening, 4 o'clock, 4 to 6. Okay. Okay, Sahil. Then you can continue, and I'll get back to you after the Definitely, after the sir. class. Yeah. 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 Have a Thank wonderful time with our lovely students. Thank you. thank you, sir. Thank you. How many students over here wants to get into Narsing Munji? How many students? Or have you heard about Narsing Munji or is Narsing Munji NMIMS new for you guys?
Hello. We'll wait another 5 minutes for everyone to chip in so that we can start. Has anyone tried back about the uh, tricks and the approaches that were been taught to you in the yesterday's class? कुछ भी किसी ने कहीं भी try किया? शिवानी, हर्षिता, अमोल, आदित्य, पायल, अभिषेक, कुछ ट्राई किया घर पे बैक होम? Any question, any percentage, or did you use it anywhere? I want answer, guys. If there are no answers, how will I be able to teach? That's good, Shivani. That's good. Anyone else tried?
We'll start with data interpretation today. I'll be giving you sets to solve. We'll solve and we'll see similar different perspectives using yesterday's approaches. I'll be starting the session in next 2 minutes. So guys, please message on your friends WhatsApp group about the class being started in 2 minutes. Please do that. Hello guys, let's start. What are you guys been able to see on the on your screen? Can someone unmute and tell me? क्या दिख रहा है स्क्रीन पर? Tables. Tables. Is that screen constant? Yes, sir. Perfect. So, how many of you know about data interpretation? What is data interpretation? Also,
डीआई पढ़ा होगा सबने, कहीं ना कहीं डीआई पढ़ा होगा, करेक्ट? Okay, Chenmai says it's a form of pie graph. Okay. Further, this is to analyze solution with a given frame of situation. Perfect. So what does BI includes is sometimes you might have such graphs, correct? You might have such graph. Sometimes you might have a pie diagram, correct? Sometimes you might have a line graph which goes like this, correct? Or sometimes you might have a combination this and this, this and this, or this and this. Understood, guys? This is basically data interpretation for you guys. So we what our agenda for the day is, our agenda for the day is to go with basic sums. But again, what is important about how do you calculate smartly and how do you find the right approach? So we'll start with the first question. Can you see the first question on the screen? Type yes if yes, if no, if no. Perfect. I'll give you I'll give you a minute odd. A minute I'll give you a minute to solve this question completely. You solve it first, and then I'll tell you the approach, and then we'll discuss it. Perfect. You have your 1 minute here. Whoever gets the answer, please write it in the question, in the chat box, in the chat box. I believe everyone is trying. I have very smart approach, guys. We do not need to go with a very traditional approach. Try to have smart approach. Try to minimize your calculation as much as possible. Anyone has got the answer? What is the question? The number of units sold by companies C and E. C and E in the year 2008. Correct. C and E in 1998 forms what percentage of units sold by the same companies in 2002? That is 2002. So this is the question, correct? Yes or no? Anyone has got the answer by now? Guys, am I audible to everyone?
Perfect, Chinmay. I give you time. See, I do not mind going as slow as possible. The only concern of mine is take as much time as possible, but take it only for the first time. When I teach you the correct approach, from the next time I want you guys to be as quick as possible. Only Manshu has given an answer till now. I'll still wait for next 30 seconds because I want maximum answers. Any other answers, guys? Chinmay, Yash, Tejal, Kuldeep, Kaustubh, Sanket, Anisha. I want answers, guys. See, all those people who attended yesterday's lecture, they know that how important is communication when it comes to my teaching. I wait for answers for almost everyone to answer because my entire propaganda is to make sure that everyone understands. Okay, now I've got an answer from Shubham. I've got an answer from Chinmay. Okay. Okay, let me come on to the question. How many of you actually did this? ये दोनों ऐड करके ये दोनों ऐड करके and then you divided it. You guys did it like this, correct? This is nothing but अब मुझे क्या करना है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय सीएनई 1998 ये का कितना है 50 50 100 2 2 4 एंड 200 106 106 और ये 69 प्लस 18 मतलब 0.5 से ऊपर है मतलब समवेयर मेरा आंसर मैं अप्रोक्सीमेशन पकड़ू अगर if I look at the approximation then my answer is somewhere between 106.5 के ऊपर करेक्ट ऊपर क्यों बिकॉज इधर मेरा 6.9 है और यहाँ मेरा 18 है तो ऑब्वियसली बोथ मैंने एडेड इट इज मोर देन 0.5 सो आई कंसीडर दिस टू बी 107 ठीक है ये मेरे मर्जी के लिए मैं 107 करूंगा यहाँ पे कितना है 55 एंड 64 55 एंड 64 गिव्स मी somewhere in the range of 6, around 120 correct around 120 119 भी पकड़ लेंगे but फिर 119 is again an odd number for me to suffice. See, now that I know that options are not too close, I can play with this approximation. I'm considering 119 to be nothing but 120. Now I have two things 107 divided by 120. अब मुझे पता है 120 का 10% कितना 12 बराबर 12 मतलब इसका 90% 12 अगर निकाल दूंगा मैं 10% तो 108 बचेगा 108 is close to 107 बराबर मतलब my answer option which is closest to 90% is my actual answer. So my answer is option number 4. Correct? How many of you have actually understood this? The approach which I showed. I did not do any big calculations. I only did smart approach कि मेरे पास 1 to 119 के अराउंड आया
I round it off to the number that I'm comfortable with, that is 120. And then I just saw कि 120 में से मैं 10% निकाल रहा हूँ, तो am I coming close to this? Yeah, I'm coming close to it. So my 9, जो भी मेरा आंसर होगा, वो हमेशा मेरा जो भी आंसर होगा ना, वो मेरा 90% के आसपास ही होगा. मेरा जब मेरे को पता चल गया कि मेरा आंसर 90% के आसपास होगा, तो द ओनली ऑप्शन विच आई हैव इज 89.47. Understood, guys? Anisha got it. Abhishek, you have understood now? Okay, I'll repeat it again. Rest, what about other people? Only 5, 6 answers I'm getting. What about others, guys? See, Abhishek, when you add both, when you add C and E ka performance in uh, when you add C and E का performance in 1998, the total comes to around 106.5 के ऊपर. तो मैंने उसको राउंड फिगर कर दिया 107. 107 कर लिया राउंड फिगर. And then when I'm adding to 2002 का, my total comes to approximately around 120. Now my question is, 107 is what percentage of 120? ये कल मैंने सिखाया था, करेक्ट? वो जब हमने परसेंटेज कैलकुलेशन किया, तब हमने इसलिए ये 39 is what percentage of 572. This was the first question which we did yesterday, correct? So that was the reason we took this pattern. Because अब यहाँ पे अपने को क्या फाइंड करना है? 107 is what percentage of 120. तो मैं अगर 120 का 10% निकालू तो it comes 12, तो 108 आता है, बराबर? तो मतलब 108 and 107 are close, बराबर? मतलब 107 is what percent of 120, मतलब it is somewhere close to 90%. The only option which you have which is closest to 90% is 89.47. So that is your final answer. Understood, Abhishek? What about others, guys? Harshita understands. Very good. What about others? Abhishek, you have understood now? I hope you have understood now. Yes, yes, I'm sure. Great, great, great. We'll move on to the next question. Again, I'll give you a couple of minutes. Please go through this and let me know. इकडे ना. How many of you have got the answer? Shivani has got the answer. Okay. We'll wait for some other people to answer.
Okay, let's see. What is the question? What is the ratio of number of units sold by A and E in 2001? See, when it comes to A and E, correct? A is this and E is this, correct? A and E, sorry, A in 2001 and E in 1999. Okay. So your mic is off. I'm extremely sorry for this. I'll again repeat it. I'll again repeat the same. So what happens is like when see when I had to take uh of company A ka sales in 2001, that was 48.2. Then I had to add up with E ka sales in 1999. So when I added 48.2 and 56.8, that gave me a total of 105. So my this number of 105, where did it come from? Correct. And this number 100, where did it come from? Is C ka sales in 2002 and D ka sales in 2001. So now you know 105 is to 100, where did it come from? Correct? Now the most important concept which I want to make you understand guys is, so अब मैंने 7:5 लिखा है, करेक्ट? नीचे वहां पे 7:5 लिखा है, उसके नीचे मैंने 35 और 25 लिखा है. अब तो ये 7:5 क्या है? ये 7:5 तुम्हारा रेशियो है, और 35 और 25 क्या है? 35 और 25 है तुम्हारा हमेशा सेल्स है. ठीक है, ये सेल्स है, याद रखना. अब मेरा जो रेशियो रहता है और वो जो मेरा जो एक्चुअल नंबर रहता है, वो हमेशा 100% टाइम्स डिवाइड होना ही चाहिए. दैट्स अ रूल. ठीक है. नाउ व्हेन यू सी 21 एंड 20, करेक्ट? 21 5 are 105, 20 5 are 100. दोनों दोनों के इसमें डिवाइड हो रहा है. 20 105 21 से भी डिवाइड हो रहा है, 100 20 से भी डिवाइड हो रहा है. करेक्ट? दैट मींस दोनों में रिमाइंडर जीरो है. दिस इज अ गोल्डन रूल विच यू नीड टू रिमेंबर. Why? Any case you need to understand this कि compulsory remainder zero आना चाहिए. What? Why? Because 105 to 100 you are doing nothing, but you are just simplifying it further. So it should always and always be divisible with keeping a remainder of zero. Understood? Understood this concept? If yes, give me a thumbs up or say yes.
Others have understood, everyone? परफेक्ट परफेक्ट. सो अब ये क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन में मेरे को 105:100 है बराबर. अब यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और एक अप्रोच जो देखते हैं. अब 105 और 100 में ज्यादा गैप नहीं है, करेक्ट, हार्डली 5 का गैप है. अब यहाँ पे देखो ऑप्शन वन देखो तुम लोग. व्हेन यू सी ऑप्शन वन, the gap is big, the gap is big, the gap is big, the gap is big. The only option where the gap is small is option number 5. So there are two perspectives of looking into it. एक तो डिविजिबल कंपलसरी होना ही चाहिए. अगर डिविजिबल होने के बाद भी मेरे पास दो ऑप्शन है, तो आई नो अबाउट हाउ टू लुक एट इट, कि गैप कितना है, ज्यादा है. अगर बड़े में मतलब गैप ज्यादा बड़ा नहीं होगा ना, तो तुम्हारा रेशियोज में भी गैप ज्यादा बड़ा नहीं होगा. परफेक्ट. गुड इनफ टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गाइस गुड इनफ. परफेक्ट. ये पर्सपेक्टिव कुछ समझा, नया लगा कुछ पढ़ के, समथिंग न्यू टू अंडरस्टैंड. परफेक्ट. या नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक दिस इज अ प्रीटी इजी क्वेश्चन एंड इट विल नॉट टेक मच ऑफ अ टाइम. एनीवन विद द आंसर. एनीवन विद द आंसर गाइस. 8.2 says Yash, 8.25, 8.52 says Harshita, Himanshu says 7.17. Okay. What about others, guys? I'm waiting for more answers. We have 30 students on board and hardly 4, 5, 6 answers. Has anyone tried to solve this without using a pen?
Any more answers, guys? Before I go on, Ati, Aditya, Chinmay, Yash. Anyone has anyone tried to solve this without using pen? No usage of pen. I'll teach you about how do you solve this question without using pen. It's damn simple. Has anyone tried it? Okay, let's see. ठीक है, हमको क्या करना है 2000 2003 दिस ईयर एंड दिस ईयर का कंपैरिजन करना है, करेक्ट? अब ये और ये, ठीक है, दिस टू नंबर्स, इसमें यहाँ पे +4 ऊपर का 4 ज्यादा है, करेक्ट? यहाँ पे +4 ऊपर का 4 ज्यादा है, यहाँ पे +11 नीचे का ज्यादा है, करेक्ट? सो द टोटल कम्स टू -7, -11 if I say -11, यहाँ पे 58 था, यहाँ पे 54 था, तो मैंने +4 लिख दिया। यहाँ पे 54 है, यहाँ पे 65 है, तो मैंने -11 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, पहले मैं +4 फिर -11, ठीक है, फिर यहाँ पे 62 68 मतलब वापस -6, यहाँ पे 17 59, यहाँ पे 70 मतलब वापस -11, यहाँ पे 64, यहाँ पे 51 मतलब +13, यहाँ पे 59, यहाँ पे 55 मतलब +4। अब अगर मैं ये कैलकुलेट करूंगा, ये दोनों करके ये दोनों करूंगा, प्लस कितना है मेरे पास? प्लस में 4 है, प्लस में 13 है, और वापस प्लस में 4 है, बराबर। 4 + 4 8, 8 + 13 gives you 22 21, और यहाँ पे कितना है? 11 11 22 एंड 6 मतलब 28। ये +21 है, ये -28 है, मतलब ओवरऑल डिफरेंस कितने का? 7। द ओनली ऑप्शन विच आई हैव इन 7 इज 7.17। अंडरस्टूड? Did I use pen? मतलब I had no need to use pen, and if I had not to explain you guys, but just to explain you guys, I used pen. मैंने फर्स्ट 2 डिजिट्स में ही खेला इसके साथ, समझ रहे हो? So the approach, was it different? Was it something that you did not know before? Abhishek, Siddharth. Okay, that's good. That's good. See, if you guys are learning something new, then it's worth me sitting over here. That's good. That's good. We'll move to the next question. Again, I'll give you a span of around couple of minutes for you guys to understand, and then I'll teach. This is again simple. Try to do it as per the method which I taught you. I hope everyone is trying. It's not that difficult, guys.
Aditi says 0.8. Okay, let's figure out. Let's figure out. F sales का total कितना आ रहा है? Well, I'll wait for more couple of minutes so that I get more answers. Then we'll discuss. Yash says 2%. Shubham says 2%. Okay. Okay. There are two things. One is F ka total we need to find, and other is B ka total. Can someone tell me F ka total? Somewhere around 343 something. Correct. And B का total is somewhere around 337. करेक्ट ये नॉर्मल कैलकुलेशन था बराबर गुड इनफ अब मेरा डिफरेंस कितना है डिफरेंस है मेरा 6 का जस्ट सेकंड माय एफ का टोटल कम्स अप टू 343 करेक्ट माय बी का टोटल कम्स अप टू 337 राइट सो माय डिफरेंस ओवर हियर इज हाउ मच 6 का but in this case what is happening is I have two very close options that is if I have to do 3.3 337 divided by 6 that is the इसका 1% is nothing but 3.3 correct so अब मैं देखूंगा 3.3 इससे 3.3 का डबल है 6.6 करेक्ट 6.6 इज डबल सो मेरा इसका परसेंटेज should be less than 2 the only option that I have and closest to 2 is 1.7 correct but again here I have very close options of 1.7 and 2 percentage but plus in this case I'm ignoring the
the external pointers, the decimal points after dot. So in this case, when we have such extreme close option, it is mandatory for each one of you to add everything, all the numbers precisely. You add the entire F column, you add the entire B column. Then you will get something called as, for F column you will get 343.82, and for B column you will get 337.07. This is something which you will get. This is for F, this is for B. Now when you see the difference is 6.75. Understanding? Now, now see, now see Bika. Bika is 3.3 is 1%. Now if 3.37 is 1%, you look at 6.75, it is twice. So there now to be 2% when you go at option number 4. Correct. So this is where the complexity chips in, and this is the reason whenever you have such close options, this was on purpose of me keeping this question in the slides. Why? Because I had to put it on purpose, because you should always be knowing that whenever there are such close options for 1.72 and all, it is mandatory for each one of you to do the entire calculation and do not go into approximation, which we have learned in the earlier questions. Why? When you look at this question, earlier question, I'll get back to this earlier question. When we did approximation over here, so look at the options: 89, almost 90 percentage, then almost 81 percentage, then almost 72 percentage, 76 and 64. The options were way too far from each other, correct? But now when we come on to this question, look at the options: 0.8, 1.7, 2.6, 2, 3.1. So the options are very close to each other. So when such is the case, it is always advisable from my end to always do entire crux calculation of each and every numbers present in the table. Understood? I hope everyone has understood. I just want a thumbs up or a yes in the chat column so that I can move on to the next question. Chinmay says yes, great. Amol says yes. Suyok says yes. Abhishek? Perfect, perfect. We'll go to the next question. We'll Perfect. We'll come on to this. This is a new set. Take a minute's time. No issues with that. Take a minute's time. Understand the set very properly. Once you understand the set, make sure that you read the question and try to solve it. You have 2 minutes with you. I hope the question is visible, correct? I think Damini has some issues. Red box on the question, please slide it. The question is visible to you guys, right? The question slide remains constant, right?
Can just everyone give me a heads up if the question side is constant? There has been no fluctuation, right? When I'm switching tabs, question का slide वैसे ही रहता है, correct? Perfect. See, in this question, there is no shortcut. It's all about how quick and how good you are in calculation. Manshu says 35. Okay, it's just pure calculation. The reason of having this question right now with you is that I want you guys to practice it as fast as possible. Suyok says 40. Waiting for other people to give your answers, guys. Harsh says 35. Aditi says 40. Suyog and Aditi are on 40. Rest others are on 35. Waiting for 5 to 6 other people to give their answers. Guys, I want maximum participation. And that's only and only possible if you are more proactive in solving your answers. Yeah, Himanshu. Okay. See, basically, what this question is all about. What does that says? Approximate average annual income of the company over a given point. If it has no other source of income. See again, what is the most important point is this assumption. If this assumption was not stated in the question, I do not know whether उसमें और दूसरा source of income होता कि नहीं. Now that I know कि इसमें और कोई source of income नहीं है, then I can solve this question. नहीं तो अगर इसमें मेरा fifth option होता cannot be determined. तो मैं इस पे टिक करता बिकॉज मेरे पास आधा इन्फॉर्मेशन है बट अभी इधर मेरे को लगना क्लियरली स्पेसिफाई किया है देयर वाज नो अदर सोर्स ऑफ इनकम तो मेरा 2000 मतलब 2001 का इनकम क्या 7 + 7 + 11 + 9 वैसे मैं ये सारे ऐड करूंगा ये पूरा ये पूरे ये पूरे ये पूरे करेक्ट
ये मैं चारों चीजें ऐड करूंगा, इसमें मेरे पास और कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इसका मेरा टोटल आएगा 199। करेक्ट? इज द टोटल कमिंग 199 गाइस? गाइस, इज द टोटल कमिंग 199? परफेक्ट। अब 199 को कितना, मेरे को एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालता है? नंबर जितने भी होंगे ऊपर न्यूमरेटर में, उसका सबका सम करते हैं हम, बराबर, एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। अब इसमें कितने प्रोडक्ट है? एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच है, बराबर, फाइव। अब 199 को मैं राउंड फिगर करता हूँ 200। 200 डिवाइड बाय फाइव। फाइव फोर जा 20, 40। माई आंसर इज 40। मैंने कम हियर, माई आंसर इज 40। It's a long way. I do agree, but see, the numbers are very pretty small. 7, 7, 14, 14, 11, 25, 25, 9, 36. It takes 5 seconds to solve 2001 का, to add. सीधा लिख देने का, यहाँ पे मैं ऐड कर दिया, यहाँ पे 36 लिख दिया। फिर वापस कितना है? 9। या फिर अगर मेरे को ऐसे 9, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 12 29, 29 प्लस 17 39, 46। You get 46. It hardly took me 10 seconds to calculate these two parts. वैसे ही मेरे को रेस्ट 3 करना है, मोर 10 15 सेकंड्स में। बाय अराउंड 30 सेकंड्स आई विल बी डन विद एडिशन ऑफ ऑल द थिंग्स। इसका एडिशन मैं कर लूंगा, एंड फिर मेरे को सिर्फ डिवाइड करना है। हार्डली 45 सेकंड सम, नॉट मोर देन 45 सेकंड्स। परफेक्ट। गुड टू गो विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव इट अ ट्राई। थोड़ा फास्ट है ना गाइस, थोड़ा फास्ट। What percent profit of the company through its clothing business over a period of time? प्रॉफिट कितना हुआ? What is the percentage profit of the company through its clothing business over a period of time? I'll give you one more minute. I'll give you one more minute. 28 says Chinmay, Yash says 28, Damini says 28, Himanshu says 26. I want other people also to try. Constant 5, 10 people have been continuously giving answers. What about others? Tejal,
आयशा says 33, संकेत says option 1. प्रॉफिट कितना रुपए का हुआ हमारा? What is the profit, guys? 9. परफेक्ट. मेरा कॉस्ट कितना है? 32. मैं 9 डिवाइडेड बाय 32 करूंगा तो मेरा परसेंटेज कितना आएगा? 9 डिवाइडेड बाय 32 करूंगा तो परसेंट कितना आएगा? 9 है और 32 है. सो दिस अगेन इज व्हाट 9 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 32, बराबर. तो मेरा 32 का 10 10 परसेंटेज इज 3.2 3.2 3.2 3.2. अगर मैं 3 बार ऐड करूं तो 9.6 होगा. तो ये 10%, ये 10%, ये 10%, तो ये 30% होगा. करेक्ट. 30% आ गया मेरा 9.6. और मेरा है एक्चुअल 9. मतलब मेरे को पता है कि मेरा आंसर जो है ना वो 30% से कम है. तो मेरा माई दिस इज आउट. ऑप्शन 2 इज आउट, ऑप्शन 3 इज आउट, ऑप्शन 4 इज आउट. करेक्ट. नाउ अब 9 इज वेरी क्लोज टू 9.6. करेक्ट. अब गैप कितने का यहाँ पे? 0.6 का. और अगर मैं इस 3.2 का 1%, अगर मैं 32 का अगर मेरे को 1% फाइंड करना है तो कितना होता है? 0.3. और मेरा गैप कितना है? 0.6. मतलब डबल का. मतलब मेरे को 2% कम करना है. 2% कम करना है. मतलब माय आंसर ओवर हियर इज 28. बिकॉज दिस इज नथिंग बट 30% माइनस 2%. यू नो हाउ डिड दिस 30% कम फ्रॉम? 30% यहाँ से आया जो मैं 9.6 का किया. ये 2% कहाँ से आया? 2% यहाँ से है जो मैं इधर 0.6 और 0.3 का बताया. अंडरस्टूड? परफेक्ट. We'll move on to the next question. Yeah. What is the ratio of total company's total income through automobile to its total expenses on hotel? ऑटोमोबाइल का टोटल इनकम. ठीक है. टू टोटल एक्सपेंसेस ऑफ और होटल का एक्सपेंसेस. इसका टोटल इज टू इसका टोटल. टेल मी द टोटल गाइस. मेरे को ऑटोमोबाइल के इनकम का टोटल बताओ. परफेक्ट. यहाँ पे लिख देता 54. मेरे को होटल का एक्सपेंस का टोटल बताओ. 62. ठीक है. परफेक्ट. अब मैंने तुमको कहा कि ये तो नो मेरे तो ये मेरे नंबर्स है, बराबर. अब मेरे को इसको रेशियो में फाइंड करना है. तो मेरा रेशियो जो भी आएगा उसको हमेशा, अगर मैं 62 को कोई भी नंबर वो रेशियो से डिवाइड करूं तो हमेशा रिमाइंडर 0 आना चाहिए, बराबर. ये मैंने कहा था तुम्हें, इसके पहले सिखा था. करेक्ट. यस और नो? तो मैं अगर 62 के डबल में 62 आता है, नहीं, आउट. 31 के डबल में 62 आता है, हाँ. 19 के डबल में 62 आता है, आउट. 17 के डबल में 62 आता है, आउट. 21 के डबल में 62 आता है, आउट. द ओनली ऑप्शन विच आई हैव ओवर हियर
is this 27:31. So my answer is option B. Understood? Perfect. We'll quickly move on to the next question. Next question. Any answers, guys? What is the total percentage profit or loss for the company in the year in which it has incurred a loss more than one industry? First, tell me the year in which the loss has been incurred for more than one industry. पहले क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन क्या पूछा है? In the year which has incurred a loss in more than one industry. 2005 में देखो मेरा इसमें लॉस हुआ है, बराबर लॉस हुआ है. लॉस कैसे होता है? जब तुम्हारा एक्सपेंस इज ग्रेटर देन इनकम, तब तुम्हारा लॉस होगा. अब इसमें एक्सपेंस कम है तो ये प्रॉफिट हुआ, इसमें एक्सपेंस कम है तो ये प्रॉफिट हुआ, इसमें एक्सपेंस ज्यादा है तो ये लॉस हुआ. करेक्ट? करेक्ट, अंडरस्टूड? यहां तक समझा सबको? समझा यहां तक सबको? यस और नो? परफेक्ट. अब मेरे को देखना है कि यहाँ अब क्या पूछा मेरे को? प्रॉफिट और लॉस पूछा है, ठीक है. अब यहाँ पे मेरा प्रॉफिट और लॉस कितना है? यहाँ पे मेरा लॉस कितना है? 2 का. यहाँ पे मेरा -2 है, बराबर. यहाँ पे मेरा +1 है, यहाँ पे मेरा +2 है, और यहाँ पे मेरा -3 है, बराबर. मेरा माइनस कितना हो गया? टोटल हो गया माइनस का -5 और प्लस का +3. मतलब मेरा ओवरऑल 2 रुपया लॉस है, बराबर. मेरा इनकम कितना है? इनकम है मेरा 5, 5 + 9, बराबर. मेरा इनकम है 38 और मेरा हेलो, कैन यू हियर मी गाइस? मेरा इनकम है 40. तो 2 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 40? 10% ऑफ 40 इज 4. 2% ऑफ 40 इज 5. मेरा 5% है. अब यहाँ पे मैं देखता हूँ लॉस इज मोर देन 7%. नो. अभी हमारा लॉस है या प्रॉफिट है 5%? ये हमारा लॉस है, बिकॉज ओवरऑल हम नेगेटिव में है. तो लॉस इज नॉट मोर देन 7%. फिर यहाँ पे प्रॉफिट इज मोर देन 3%. नहीं, ये भी नहीं हो सकता. लॉस इज लेस देन 3%? नहीं, बिकॉज 5%. ये भी नहीं. नो प्रॉफिट नो लॉस, ये भी नहीं. तो मैं आंसर इज नल ऑफ दिस. अंडरस्टूड? परफेक्ट.
क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये मेरे को बहुत क्विक चाहिए, फटाफट चाहिए। वो द टोटल इनकम फ्रॉम फूड प्रोडक्ट्स, इनकम फ्रॉम फूड, ये इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम फ्रॉम होटल्स। मतलब इसका जो भी आंसर आएगा, दिस डिवाइडेड बाय इसका जो भी आंसर आएगा। फूड, देखो इनकम फ्रॉम फूड इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम फ्रॉम फूड फ्रॉम होटल्स। फूड का टोटल कितना है मेरा? यू वांट मी, I'll repeat the previous question. Don't worry. I'll repeat the previous question. Don't worry. I'll just solve this question. I'll repeat the previous question. फूड का टोटल कितना है? 39। परफेक्ट। और मेरा इसका टोटल कितना है? होटल्स का? होटल्स का टोटल कितना है मेरा इनकम? 65। परफेक्ट। अब मेरे को क्या फाइंड करना है? 39 डिवाइड बाय 65। अब 60 39 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 65, करेक्ट? अब मेरा इसका हाफ करूंगा मैं, इसका हाफ, तो कितना आएगा मेरे को? 65 का हाफ इज 32.5। 32.5 इज मेरा 50%, बराबर। और मेरे को कितना चाहिए? 39 चाहिए, बराबर। मतलब मेरा आंसर 50% के ऊपर है ही, तो मेरा ऑप्शन नंबर 2 इज आउट, करेक्ट। अब 6.5 का 10% इज अगेन 6.5। 65 का 10% इज 6.5, बराबर। ये हो गया मेरा 10%। मेरा 50% वॉज 32.5, तो मेरा ये टोटल हो गया 39, विच इज नथिंग बट 60%। So my answer over here is nothing but 60%. Understood guys? ये समझा? I'll again come back to the previous question. Give me a thumbs up if you have understood this question. Rest everyone. You want me to go on to the previous question? Perfect. यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे ना, ठीक है, I'll again re-explain it. यहाँ देखो, मेरे को क्या फाइंड करना है? पहले प्रॉफिट और लॉस। फर्स्ट माय कंसर्न इज कि I have to find that year in which there is loss in more than one industry. तो यहाँ पे देखो लॉस कब होता है? When my expenses are greater than my income, तब होता है मेरा लॉस। ये कंसेप्ट समझ गया तुम लोग? ये कंसेप्ट समझा? यस, परफेक्ट। अब यहाँ देखता हूँ मैं, 2005 में मेरा एक्सपेंस ज्यादा है, लॉस ज्यादा, एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है, बराबर। तो यहाँ पे मेरा लॉस हुआ, बराबर। ये इसमें मेरा प्रॉफिट हुआ। मैं सिर्फ 2005 देखना, यही देखना, ये साल ही देखना, सिर्फ 2005 देखना। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 11 है, मतलब मेरा प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 13 है, मतलब मेरा लॉस हुआ, बराबर। मेरे को मिल गया वो साल 2005। 2005 इज दैट ईयर वेयर आई हैव इनकर्ड लॉस इन मोर देन वन इंडस्ट्री, बराबर। मतलब मेरे को यही ईयर का पूछा है। परफेक्ट, यहां तक समझा? 2005 मैंने क्यों सिलेक्ट किया, समझा? एवरीवन, आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स, मेरे को क्विक रिएक्शंस हो, आई कैन मूव एट फास्ट। परफेक्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मेरा यहाँ पे अब मेरे को क्या देखना है? लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। सो मेरे को ओवरऑल लॉस फाइंड करना है। ओवरऑल लॉस कितना है?
मतलब फूड इंडस्ट्री में कितना है मेरा, 2 रुपए का लॉस, मतलब -2। क्लोथिंग इंडस्ट्री में क्या है मेरा, 1 रुपए का प्रॉफिट। 8 और 9 है ना, 8 एक्सपेंस है, 9 इनकम है, तो मेरा 1 रुपया प्रॉफिट हुआ। ऑटोमोबाइल में मेरा क्या है, 2 रुपए का प्रॉफिट, बराबर। एंड होटल्स में क्या है, होटल्स में मेरा 3 रुपए का लॉस। सो मैं जब ओवरऑल देखता हूँ ना, ओवरऑल, तब क्या है, ओवरऑल मेरा 2 रुपए का लॉस हो रहा है, बराबर। ओवरऑल मेरा 2 रुपए का लॉस हो रहा है, यहाँ तक एवरी वन इज विथ मी। परफेक्ट। So now that I know 2 rupees loss on my total income of 40 rupees, जब मैं सब ऐड करूंगा ना इनकम, तब मेरा 40 रुपीज है। तो इसका मेरे को वही परसेंटेज निकालना है। सो 2 इज नथिंग बट 5% ऑफ 40। अब मैं देखूंगा ऑप्शन, तो ऑप्शन 1 इज लॉस इज मोर देन 7%। नहीं, मेरा लॉस 5% ही है, तो मेरा ये ऑप्शन आउट हो जाता है। मेरा प्रॉफिट इज मोर, प्रॉफिट तो मेरा हुआ ही नहीं है, तो ये भी आउट। लॉस इज लेस देन 3%, नहीं, लॉस मेरा 3% से ज्यादा है। नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसा भी नहीं है। फिर मेरा द ओनली ऑप्शन दैट आई हैव लेफ्ट टू मार्क इज नन ऑफ दिस। दैट इज द रीजन आई हैव मार्क्ड नन ऑफ दिस। गुड, अंडरस्टूड। परफेक्ट, परफेक्ट। द लास्ट वन सेट which we'll do for tonight. Anytime, Himanshu. AC, the entire purpose, the reason I'm going very slow is I want your basics to be correct. What other faculties do is like they tend to cover maximum syllabus. वैसा नहीं होता कैट में। कैट में इज ओनली कि अगर तुम्हारा बेस क्लियर है ना, भले तुम 3 घंटे के बदले 6 घंटे लो, इट्स कंप्लीटली फाइन। बट इफ योर बेस इज स्ट्रॉन्ग, तुम्हारा 80-85 परसेंटाइल वहां पे फिक्स हो ही गया। देन यू हैव टू वर्क ऑन दी फॉर गेटिंग दैट 90 परसेंटाइल। परफेक्ट, cool. अब you will have this question, you attend this question. Try to understand this set. This is the last set which we'll do for the day. Try to understand this set very well, and then we'll start solving questions. How many people participated in the auditions in 2007? Anyone with the answer? Sanket says 1950. Okay, Sanket. Too quick. Good man.
Okay. Himanshu says 2000. Okay, that's good. Sanket, Suyog, Himanshu. Any others who are done with the answer? Abhishek says 2000. Perfect, Abhishek. Good. Siddharth, 2000. Okay. Mol says perfect. I expect the question. See, what is important over here is to understand. See, ये जो मेरा है ना. See, see, these are the people who are qualified. अब मुझे rejection चाहिए तो ये how much is 850 plus 725? How much is 850 plus 725, guys? That gives me around 1575. And then when I substitute that from 2425, it gives me 850 over here. It gives me 850 over here. So then when I add these two things, it gives me 2000. My answer over here is 2000. Was this the same approach that you guys followed? Correct. So Sanket, I'll explain. So this is the data of, see, this is total. This includes the number of participation because these are the people who got qualified to the round 2 and these are the people who got rejected in round 1. So qualified plus rejection gives you a total of number of participation. Sanket, I hope I have answered your question. Great, great. Quickly moving on to the next question. The number of rejected candidates from B region in the year 2006, ये find करना है मेरे को, is what percentage of total number of participating candidates in the same year? टोटल तो अपने को इजीली मिल जाएगा, 1500 है. This is 1500 total.
Now you just need to find this. Try to find this, guys. Be very smart, guys. Anyone who gets the answer, let me know. Anyone who has got the answer? Domini says 1 or 2. Okay. Himanshu says 61.5. तुम्हें मिला कैसे बट आर का 2006 में बी रीजन का आर का रिजेक्शन मिला कैसे? दैट इज व्हाट माय एंटायर ऑब्जेक्टिव इज. Can anyone just let me know about how did you get that? How did you get the number of rejections of B regions in the year 2006? You got Anisha, you got that as 150. Okay, how did you get that? It will be less than 1150 minus 500. Okay. Okay, table calculation. Perfect. I'll let you know, guys. I'll let you know, guys. Do not worry about it. See, how do we calculate in this? It's very simple. It's just that you need to know about the correct approach to this. So in this question, the first thing that we need to find is 2000. ये हमें पता है, ये हमें पता है, हमने लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था 850 है बराबर. ये 850 है क्वालिफाइड का. अब हमें रिजेक्शंस के जानना है. 2007 में रिजेक्शंस का टोटल मतलब 350 प्लस दिस इज इक्वल्स टू 1150 बराबर. ये क्वेश्चन में दिया है. अब मेरे को अगर आर सी रीजन का रिजेक्शन फाइंड करना है ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स इन द ईयर 2007,
So what I'll do, 250 plus this 250 plus 225 plus this should be 925 बराबर. So 250 plus 225 gives me 475. 475 when I minus from 925 gives me 450 बराबर. ये मेरे को 450 आ गया. परफेक्ट. अब मेरे को ये फाइंड करना है. सो दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 1150. ये समझा कहां से आया 1150. ये 1150 दिया है. इसमें कैसे था, इसमें मेरे को ये सबका टोटल, ये तीनों का टोटल मेरे को 925 चाहिए था, जो मैंने यहाँ पे लिखा 457. अब मुझे 2007 ईयर में जो रिजेक्शन हुए हैं ना, मतलब ए रीजन में ये इतने रिजेक्शन हुए, बी रीजन में इतने रिजेक्शन हुए, सी रीजन में इतने रिजेक्शन हुए, इसके टोटल 1150 है बराबर. तो इधर कितना आएगा. सो 350 प्लस यहाँ पे कितना है 450 प्लस समथिंग शुड बी 1150. So that something is what? Something is nothing but 350. तो मेरा 350 350 700 700 प्लस 450 1150. तो ये यहाँ पे मेरा अमाउंट मैच हो रहा है. परफेक्ट. वही सिंपल केस इधर. अभी इधर मेरे को कितना चाहिए 1150. 1150 चाहिए मेरे को. करेक्ट. आई वांट 1150. सो 1150 माइनस 500 माइनस 350 दैट गिव्स मी यहाँ का वैल्यू 300. तो आई हैव गॉट rejections in B regions in the year 2006 as 300. अंडरस्टूड. यहाँ पे समझा, ये काफी अच्छे से समझा. हमेशा याद रखो, दिस इज टोटल ऑफ द एंटायर कॉलम, दिस इज टोटल ऑफ द एंटायर कॉलम, दिस इज टोटल ऑफ दिस एंटायर रो. तो माय एंटायर कैलकुलेशन वर्क्स एज पर दैट. अंडरस्टूड गाइस. परफेक्ट. अब मेरा 300 आ गया. करेक्ट. 300 आ गया. 300 divided by is what percentage of total number of participating in this year. Participating कितना है मेरे 2007 में 2000 है. सॉरी 1500 है. 1500. So this is nothing but इसका मेरा 10% is 150. So 20% is 300, which is my actual answer. So my answer is nothing but 20%. Understood guys? थोड़ा ट्रिकी था, बट ये जब तुम खुद सॉल्व करोगे तब समझेगा. So it's again my request कि you have to again solve this question after this lecture. But I hope you have got the crux. How does the calculation works? Perfect. One, we'll solve this question. We'll solve. You can see the question on the screen, right? ओवरऑल रिजेक्शन रेट फॉर सी. रिजेक्शन रेट क्या होता है तुम्हारा? व्हाट इज रिजेक्शन रेट? इज टोटल कैंडिडेट्स रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय टोटल कैंडिडेट्स अपीयर्ड. सी का टोटल रिजेक्शन रेट कितना है? 925 डिवाइडेड बाय, ये कैसे मालूम पड़ेगा हमको? See, now you have this, now you have this, you do not have this, but still you have this. So 400 200 plus 400 600 plus this should equals to this. So यहाँ पे मेरा 250 आएगा बराबर. यहाँ पे मेरा 250 आएगा. So this again will be addition of 250 plus this again will be my addition of 250 plus 300
plus 275. That will give me 825. Total number of candidates appeared is qualified plus rejected. 825 plus 925. That gives me 1750. समझा ये कहां से आया 1750? Now if I have to calculate a percentage, it is nothing but 925 divided by 1750. It it is somewhere more than 50 percentage. Correct? इसका मेरे को calculation, how do you calculate? Tell me. How do you calculate? Tell me. How do you calculate? See, the number of rejected candidates is 925. Correct? Which is more than the number of candidates that qualified. बराबर? मतलब रिजेक्शन मेरा 50% से ऊपर है ही. अगर ये सेम होता तो 50-50 होता, बराबर. बट मेरा रिजेक्शन इससे ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आई एम ग्रेटर देन 50%. तो मैं ऑप्शन 1 इज आउट, my option 5 is out, my option 2 is also out because 50-50% भी नहीं है. अब मेरा ऑप्शन 3 और 4 है, which are very close options. The very close option will require precise calculation. So 925 divided by 1750 into 100 will give you an exact answer of 52 point something, which is 53%. Again, I have told you, when there are very close options, you have to go with entire calculation. You cannot take a chance of approximation. But in this question, how do you eliminate the other three options? You know, now that you are rejections is greater than your qualifications, qualified candidates. That means अगर ये सेम होता तो 50-50% होता, बराबर. बट ये मेरा ज्यादा है तो 50% से ऊपर, तो मेरे तीन ऑप्शंस एनीवेज आर आउट. करेक्ट? सो इन दिस केस वी गेट we are down with two options, that is 54 and 53. But since the options are very close to each other, then we need to have a very precise calculation. Understood, guys? Yes or no? Perfect. One last question. One last question. Yeah, yes, don't worry. I'll repeat it. I'll repeat it after this question. Sir, please unmute your mic, sir. Can you hear me now? Yes, sir. Perfect. So, as I told you, sum of the product, sum of the numbers divided by quantity of numbers. अब मेरे को एवरेज निकालना है, बराबर. एवरेज में ऐसे ही निकालता हूँ. तो एवरेज मेरा नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 3. तो मैं डिवाइड बाय 3 करूंगा. मेरे टोटल कितना है? इसके टोटल तो मेरे को लकीली दिया हुआ है 2425 प्लस ये मैं टोटल करूंगा तो मेरा आएगा 2825, which is, तो when I add both of these, it will give me 5250. It will give me 5250 divided by 3 will give me 1750. That is my actual average. समझ गया ना ये कैसा? एवरेज इज नथिंग बट सम ऑफ 3 years. अब यहाँ पे 850 है, ये तो हमने फर्स्ट सेकंड में भी कैलकुलेट किया था, तो उसके हिसाब से मैंने ये ऐड करके मेरे को 2425 लोग ने दिया है. वैसे मैं ये सेम ये ऐड करूंगा
तो मेरे को 2825 आएगा, करेक्ट। तो अभी मेरे को दोनों का ऐड करना है, बिकॉज मेरे को क्या पूछा है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्वालिफाइड प्लस रिजेक्टेड। तो मेरे को ये दोनों का 2425 प्लस 2825 करना है, तो मेरे को आएगा 5250। ये मेरे को 3 साल का सम है, 3 साल का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, दैट गिव्स मी एवरेज 1750। परफेक्ट, good to go. Great. I'll just repeat the question prior as Yash wanted it, and then we'll wind up the session. Yes, देखो इसमें क्या पूछा है, टोटल रिजेक्शन रेट। तो टोटल रिजेक्शन रेट इक्वल्स टू टोटल रिजेक्शंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड। मुझे टोटल रिजेक्शंस तो इधर क्लियर दिखा है, 925 है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, बराबर। अब मेरे को टोटल कैंडिडेट्स अपीयर्ड के लिए, वही मैंने कहा कैंडिडेट्स अपीयर्ड के लिए क्वालिफाइंग प्लस रिजेक्ट दोनों चाहिए। रिजेक्टेड मेरे को दिया है 925, क्वालिफाइंग मैंने निकाला 825, इन दोनों का टोटल आता है 1750। तो मेरा 925 डिवाइडेड बाय 1750 को इक्वेशन आ गया। नाउ टू बी वेरी स्मार्टर, अब मैं ये दोनों चीजें देखूंगा, देखो क्वालिफाइड और रिजेक्शन कंपेयर करूंगा। अगर ये 825 और ये 825 होता तो मतलब दोनों सेम होते, 50-50% बराबर। बट अभी वो केस नहीं है, ये ज्यादा है, बराबर। तो मतलब ये जो है वो ज्यादा है, मतलब 50% से ऊपर है, करेक्ट। तो मेरा 46% आंसर नहीं आ सकता, बिकॉज वो 50% से ऊपर है। 50% भी नहीं आ सकता, बिकॉज वो सेम भी नहीं है। 48% भी नहीं आ सकता, बिकॉज वो 50% से ऊपर है। आई एम ओनली लेफ्ट विथ टू ऑप्शन, दैट इज 54 एंड 53। दैट गिव्स मी, फिर as these options are closed, then I have to do a precise calculation that gives me one of these two answers. Yes, I hope you have understood now. Yes, all the students have understood all the three sets of DI today. Yes or no? कुछ नया सीखने मिला, न्यू अप्रोचेस, न्यू पर्सपेक्टिव। आकृति, so I'm so I believe everyone is understanding what I'm teaching, correct? That's great, Chinmay. Perfect. So we'll wind up the session today. We'll wind up the session here itself. It was nice meeting you. I love to catch you back, you guys, in the next week. In the meantime, do practice whatever shortcuts, new approaches, and new techniques have been taught to you. All the very best. Good luck. Bye bye, guys. Had a nice time. Enjoy your Sunday. Bye bye. Akriti, I hope you're taking down the attendance. I'll be stopping the presentation as well as I'll be stopping the recording in the meanwhile.